रामनिधि मंदिर एवं सोमनाथ मंदिर, all of them are located in Khurda. So how do we preserve a 1,000-year-old temple for the next 1,000 years? Not just the stones, the stories, the spirit, the ऐतिह्य। सही प्रश्नर उत्तर खोजिया पाई आज आमे समस्त एठारे एकत्रित होइछु। It gives me immense pleasure to welcome you all to this landmark MOU signing ceremony on the theme Strengthening Heritage through Knowledge Partnership. Today is not merely the signing of two MOUs, it is the beginning of a new institutional vision where archaeology meets technology, conservation meets innovation, and heritage becomes future ready. आम प्राचीन ऐतिह्य को आधुनिक ज्ञान और प्रजुक्ति सह जोड़ीबार यह एक नुआ पदक्षेप। Each monument presents not only heritage but a responsibility to conserve, document and preserve it for future generation. यह आमर गौरव एवं यह को सुरक्षित रखिबा आम समस्तंकर दायित्व। ओडिशा स्टेट आर्कियोलॉजी जदि आमे देखिबा तो वी वर्क अक्रॉस कंजर्वेशन, म्यूजियम्स, आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन, रिसर्च, documentation and public outreach. But heritage management today cannot remain limited to repair works alone. It must become scientific, it must become digital, interdisciplinary and people-centric. Now, why this collaboration matters today? Heritage conservation today faces many challenges: climate impacts, structural deterioration, urban pressure, shortage of skilled manpower and technological gaps. Therefore, preservation today requires archaeologists, architects, engineers, planners, scientists and technologists to work together. जेपरि आमे कहू संजोगरे अछि शक्ति, collaboration creates strength. Now coming to Vision 2036 goal of Odisha. As Odisha moves towards Vision 2036 and 2047, our heritage institutions must also become future ready. Digital archives, LIDAR mapping, 3D documentation, AR/VR interpretation and smart museums will define the future of heritage conservation. Now coming to today's MOU signing, that is our collaboration with SPA Bhopal. Our partnership with SPA Bhopal will strengthen heritage planning, conservation architecture, museum development and capacity building. At the same time, IIT Kharagpur will support advanced scientific technologies such as LIDAR scanning, GIS mapping, structural analysis and digital modeling. पुरातन ऐतिह्य सह आधुनिक प्रजुक्तिर एही समन्वय आगामी दिन में अत्यंत गुरुत्वपूर्ण है। This collaboration is envisioned as a complete heritage cycle from survey and documentation to analysis, conservation planning, digital archiving, public interpretation and research. The aim is to preserve monuments as well as to create knowledge systems around heritage. This slide represents the future. Imagine preserving every sculpture, every carving, every structural detail in digital form from centuries to come. That future has already begun. एवं ओडिशा को सही परिवर्तनर एक अग्रणी राज्य करिवा हमर लक्ष्य. With today's program of signing of the MOUs, we begin a larger vision, preserving Odia's glorious ऐतिह्य through science, technology, research and collaboration. आमर ऐतिह्य, आमर परिचय, आमर भविष्य. With these words, I once again extend my heartfelt welcome to all dignitaries and participants present here today. धन्यवाद. जय जगन्नाथ. सूचनार स्वागत रे सुंदर शब्द पाई बहुत धन्यवाद डॉक्टर धन्यवाद एवं मन पकेवा पाई कि जो बुझामणा दुईटी आज स्वाक्षरित हेउछि हम गौरवमय इतिहास को उत्तर पीढ़ी सहित जोड़ीबार गुरु दायित्व रे ताहा बड़ भूमिका ग्रहण करबो मु करदायिटी चाहिबे प्रयास पाई एवं एथि सहित सम्माननीय स्वतंत्र शासन सचिव श्री देवप्रसाद दास महोदय को अनुरोध करिबे विशेष अवसर रे निजर वार्ता रखे। जो डायरेक्टरेट आर्कियोलॉजी बा प्रत्नतत्व निर्देशालय गठन होबार ता गठित होईछि एवं राज्य कैबिनेट क्यूरेटर जो सेवा नियमावली ताकू अनुमोदन करचंती।
ଏବଂ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱକ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ରିମେନ୍ସ ଅଛି ବା ଯାହା ସବୁ ବଳି ଯାଇଛି ବା ସଂରକ୍ଷିତ ହେଇଛି ସମୟର ଆକ୍ରମଣରୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକ। ଯଦି ଆମକୁ ଏବେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ନିକଟରେ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାମିଲନାଡୁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ସେଠି ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅଭିନେତା ଅଛନ୍ତି ଚିଆ ବିକ୍ରମ ବୋଲି, ସେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବୃହଦେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯୋଉଟା ଚୋଳ ଏମ୍ପାୟାର ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେ ବୃହଦେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ 100 ଟନ୍ର ଗୋଟେ ପଥରକୁ ବିନା ସିମେଣ୍ଟ ବିନା ସେତେବେଳେ ତ କ୍ରେନ୍ ନଥିଲା ତାକୁ ଉଠେଇକି କିଭଳି ଲଗାଯାଇଛି। ଆମେ ପିରାମିଡ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁଲି ଯାଉ କାରଣ ଆମେ ଟିକେ ବିଦେଶୀ କଥା ଦ୍ୱାରା ବେଶୀ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଥାଉ। ତେଣୁ ଆମର ଯାହା ଯାହା ଅଛି ତାହା ଆମକୁ କେବଳ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରେ ନାହିଁ, ଗର୍ବିତ ବି କରେ ଯେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। Coming together of heritage and technology, tradition and innovation, memory and modernity. This MOU India's cultural soul. The responsibility of conserving such a vast and luminous legacy is both an honor and a solemn duty for all of us. Under the Odisha State Archaeology and allied institutions, the task before us is not merely to repair structures or protect monuments. It is to preserve the spirit of our people, the continuity of a culture and the silent wisdom of our generations. This noble responsibility demands sensitivity, scholarship, scientific understanding, advanced technical expertise, interdisciplinary planning. With IIT Kharagpur and SPA Bhopal comes at a most opportune and meaningful moment. Through this MOU, our department will be enriched by the nationally and internationally recognized expertise of these premier institutions of India in the areas of architectural conservation, restoration of heritage structures, heritage precinct planning, cultural landscape management, sustainable infrastructure design, climate responsive development and the application of documentation technologies and heritage mapping. One of the most important pillars of this partnership will be capacity building of our own officers. Our officers, technical staff and field functionaries are the custodians who are closest to the ground, often in challenging conditions to protect and manage our heritage assets. Through structured training programs, short-term courses, workshops, exposure visits and on-the-job technical mentoring. This collaboration will strengthen their professional capabilities and enhance their confidence, competence and technical rigor. It will enable them to plan, execute, supervise and monitor different conservation projects with greater precision and a deeper understanding of both heritage values and modern conservation standards. We're going to sign will always stand as a significant milestone in its journey. Official member of Odisha State Archaeology. Odisha राज्य प्रत्नतत्त्वर official लोगों ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରକାରୀ ହୋଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା। ନିଜ ରାଜ୍ୟ ନିଜ ଇତିହାସ ଆମ କଳାକୃତି ଯାହାକୁ our culture is, but also it will help us to understand our roots. Because heritage is not just a piece of monument or a building, it is a part of us. I believe that. My name is Gaurav Das Mahapatra. I am presently an assistant professor at the Department of Architecture and Regional Planning, IIT Kharagpur. I come from a very small village in Jaleshwar district called Bartana. But my family had shifted to Calcutta. From then we had always stayed in Calcutta. But from my graduation, I came back to Odisha again in APIT, Pilumodi College of Architecture. Then I did my masters from SPA Bhopal. Sir is our director. And then I did my PhD from Hokkaido University, Japan, under the MEC scholarship. I've traveled quite a bit and have seen the heritage all over the world. And second thing is that we will do also capacity building for the state archaeology department, for the student and for all the people stakeholder concerned.
So this is a small presentation, just 5 or 6 minutes, which we have tried. This is actually a photograph of the. This is actually a photograph of the present conservation, this LiDAR-based heritage documentation, which we are doing it in Bishnupur in West Bengal, involving heritage and cultural preservation. I will just provide a blank sheet to madam, and she can put whatever amount she wants. We will do the project. We will do the conservation for all the temples in Odisha. Because the Ministry of Housing and Urban Affairs has a clear mandate that they will support us in this, and we really want to go ahead with it. I think with that, I would like to end my session. Thank you so much. Individuals. It is a collective conscious understanding of the whole civilization. तो ये that gave me quite a this thing. In fact, when I joined architecture, एक बार टूर आया था, मैं आंध्र में पढ़ा था मैं आर्किटेक्चर, तो विशाखापट्टनम से हम लोग आए और visited the temple, and I was requested the authorities that can I go and stand where Dhammapada stood once. They said no, अभी restoration चल रहा है. Almost उसके 35 साल के बाद that wish has been fulfilled. I came as a National Monument Authority member for inspection, and I had an opportunity to go and stand there and pay the tribute to the Dhammapada. Dhammapada मेरे लिए एक story नहीं है, it's a whole collective consciousness की, और एक it is not an individual credit लेने की बात नहीं है, it is a societal this thing. So is that other thing. किसने कहा heritage? What is heritage? The best definition that somebody told me that आपके पुरखों की जो अमानत है, जिसको आपको संभाल के आपको फ्यूचर को देना है. So to see a very young minister who is interested to do this one, I think the second part of the job is already done. आभारी हैं कि इतने such a young age, the heritage is already into the youngsters' hand. So that way I really feel we have this thing, and Odisha is very rich. It is an inspiration. It is an inspiration right from the time of the great Kalinga War to pre-colonial era. It has immense this thing. एक और मंदिर था मेरे लिए, एक मिस्ट्री था, वैताल देव मंदिर. मैं पता नहीं कितने बार जाके देखा हूँ. उसमें हर प्रांत का हर नक्शा दिखता है. It looks like it has a Dravidian का influence है. सेनो जैसे गोपुरा का दिखता है. वल्लभी ऑफ नॉर्दर्न दिखता है. उसमें बुद्धिस्ट जो एब्सेडल का जो एलिमेंट भी दिखता है. सबसे ज्यादा वराठा जो दक्षिण कौशल महाकौशल की जो शैली है, एक मंदिर में मानो कि पूरा भारत को समेटा हुआ है. इस लेवल ऑफ ए कॉम्प्लेक्सिटी, इट्स ओनली सच काइंड ऑफ ए जीनियस ऑफ ए माइंड at those 9th 10th century could achieve it. That was a sort of a phenomena which I could never forget it. मुझे अपने लिए कभी भी अभी भी जो रोमा एसपीए से जुड़ा हूँ, पढ़ा मैं एसपी दिल्ली कंजर्वेशन डिपार्टमेंट से, देन ज्वाइन हुआ एसपीए विजयवाड़ा में एज ए प्रोफेसर. आजकल मैं वर्किंग एज ए भोपाल. तो वी हैड एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन वेरियस प्रोजेक्ट्स. मोस्टली मेरा very fundamental. The West can never understood our architecture as an architecture because the whole idea is a sub addition. ऐड करते जाओ तो ही बिल्डिंग बनता है. एक बड़ी पहाड़ को तोड़ के 1000 पत्थर बना के दूर ले जाके जोड़ो. हम ऐसा नहीं है. When I went to morning I had went to Udayagiri and Khandagiri. वो ऑलरेडी पत्थर में मंदिर दिख चुका था वो बनाने वाले को. He just had to get relief of those things which are there, and you should be right at a first time. एक भी एक्स्ट्रा स्ट्रोक लगा तो भिन्न हो सकता है. So you should have a control. How much of a understanding of a material, understanding of a design, understanding of the whole divinity has to be knocked a bit. As a consultants, right now we are also dealing with one of the country's largest conservation project, that is restoration North and South Block. जो हमारे प्रधानमंत्री जी का ड्रीम है कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाया जाए युगे युगीन भारत. तो हमारा सौभाग्य है कि हम पिछले 3 साल से उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं. This project make an effort to understand this kind of a things, learn from them, define them, do a capacity building. मैं इस कोई capacity से नहीं कर सकता हूँ कि हम लोग सब कुछ कर सकते हैं. You need to have the patience to work with the last element. हर
हर जो लोग उस चीज़ से जुड़े हैं उनके साथ काम करने के लिए, वेदर इट इज डॉक्यूमेंटेशन हो, प्रिजर्वेशन। लास्ट पॉइंट, ट्रांसलेट दिस टू द फ्यूचर जनरेशन। जो कह रहे थे कई लोग कि हम लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, क्या हमने कोशिश की अवेयरनेस लाने की एज एन अकेडमिया, एज ए लर्नड पीपल, हमने कितना प्रयास किया कि इन चीज़ों को अपना फ्यूचर के तक ले जाने के लिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस इंफॉर्मेशन जो भी है, आजकल तो यही का ज़माना है, इट इज इट्स ओन यूसेजेस इन अदर थिंग्स, देन हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस इन द फ्यूचर जनरेशन दो सो दे अप्रिशिएट इट। One with IIT Kharagpur and the second one with SBA Bhopal. Biologies, interdisciplinary knowledge integration are some of the key points. The excitement on the faces. Congratulations, can we have a round of applause for the MOU signed between Government of Orissa and IIT Kharagpur. What a fantastic day it is indeed. बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रधान महोदय को अनुरोध करेंगे से उपस्थित in this very important MOU that we are signing today with SBA Bhopal in the presence of esteemed director and esteemed secretary Government of Orissa, Orissa Language, Literature and Culture Department. We'll shake hands and close this golden moment. That's men of honor shaking hands and reiterating their commitment for the heritage of the land. Congratulations, Government of Orissa. Thank you so much, SBA Bhopal. Can we have a loud round of everyone, please? Big round of applause for this exemplary achievement. आम स्टेट आर्कियोलोजी को, राज्य प्रत्नतत्व को गोटे व्यवस्थित ढंग रे एवं आज दिन में क्यों प्रजुक्ति को, क्यों टेक्नोलोजी को व्यवहार कले गोटे शताब्दी पुराना ऐतिह्य को आगामी शताब्दी धरिकी संरक्षित करके आमे रखि परिबा, सेथिरे गोटे सेमाने तांकर सहायता प्रदान करिवे। आज अनेक छात्र छात्री को एठिकी डका जाइछि एवं विभिन्न विश्वविद्यालय अधिकारी माने, अध्यापक अध्यापिका माने मध्य उपस्थित अछंती। तो एथरे नियोजित करि नाहंती, गोटे कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच करि नाहंती, सेते पर्यंत ए कार्य साधित हेइ परिबो नाही। केवल सरकारी मापदंड, प्रशासनिक प्रयोग एक कार्य गुडी को आरंभ करि देई पारे, किंतु निर्णायक स्तर को नबा को हेले आगामी काली को एक कथा गुडी को संरक्षित करी रखिबा को हेले आमर उत्तर पीढ़ी मानकर सहयोग आवश्यकता अछि एवं सेमाने मध्य बुझिबा दरकार, सेमाने मध्य अनुभव करिबा दरकार जे आमे आज जो स्थापत्यटी देखुछंती ये स्थापत्य को तो आमे निर्माण करि नाहंती, किंतु आमर पूर्वज माने निर्माण करिके आम हाथ रे एहा को छाडी छंती। आगामी वर्ष मानक पई आमे केउ भली भाव रे एहा को संरक्षित करिके रखिबा एवं प्रत्येकटी ऐतिह्य भितर गोटे कथा अछि कि गोटे व्यथा अछि, से कथा व्यथा को पर पीढ़ी पाखरे पहुंचेबा एवं एथिपई जहा जहा उन्नत आधुनिक ज्ञान कौशल आवश्यकता अछि ताहा को प्रयोग करिबा। हमर दधि नौति खसी पड़िबो कि हमर को प्राचीर गली पड़िबो बा किछि हबो नाही, ए व्यवस्थाटा सीधा सड़क ऐतिह्य ऊपर प्रयोग न करिके आमे स्क्रीन रु देखिके जानि परिबा एवं से अनुसार जहा करिवार कथा आमे करिबा। गतकाली हम राज्य प्रत्नतत्व विभाग सहित जो कथा महापात्र बाबू कहिले जे बिरंची नारायण मंदिर रे से तांकर प्रथम कार्य आरंभ करिबे। कहा जाए जे कोणार्क मंदिर पूर्वरु बिरंची नारायण मंदिर निर्मित, केही केही ताहा को ब्रह्मा मंदिर भी कहंती, केही ताहा को सूर्य मंदिर भी कहंती। ब्रह्मा मंदिर हेई पारे कि सूर्य मंदिर हेई पारे, ये भारत वर्ष बहुत विरल। जेते बेले से बिरंची नारायण मंदिर किछि वर्ष पूर्वरु 10-15 वर्ष पूर्वरु से स्थानीय अधिवासी मानकर आग्रह हैला मंदिर रो जेति कि बेढ़ा देखा जाउची तांको पूर्वज मानंटु सुनिथिले जे से बेढ़ा तळे मध्ये आउरी कारुकार्य अछि। स्थानीय लोक मिसिकी ताहाको खोलिबा को लागिले
निज निज व्यवस्था रे केतेक स्थानीय महाविद्यालय मानकर अध्यापक माने आगे आसिले स्थानीय युवक किछि आगे आसे निजे निजे खोलिबा आरंभ कले एवं से जो प्लाटफॉर्म ऊपर मंदिरटा अच्छी जते बेले 4 फुट खोलिले देखिले से प्लाटफॉर्म ने 16टी चक्क आगुरु खोदित होइकी अछि एवं जणा गला जे एटा ब्रह्मा को मंदिर जहा को कुआ जाउतला एटा ब्रह्मा मंदिर न होई पारे एटा सूर्य मंदिर हेई पारे एवं केतेक ऐतिहासिक एबे मध्ये कहउचंती जे एही ढांचा रे कोणार्क मंदिर निर्माण करिबा पई तत्कालीन राजांकर गोटे आग्रह आसीथिला से डिजिटल अध्ययन कली जहाँ अवेलेबल अच्छी वेब पोर्टाल रे से कहिला जे भारतीय तटरू जो जहाज गुड़िक आफ्रिकीय देश गुड़िक जाऊला से माने एते बड़ लंबा भयेज बा जल यात्रा एकाथरे करि पार नथुले तांकर पीवा पानी मधुर जलर आवश्यक होतुला तांकर खाद्यर आवश्यक होतुला सेति पई से माने जो स्थान रे रहुतुले से स्थान गुड़िक जो स्थान रु जहाज आसी से आधार रे नामित हबार मध्य अनेक दृष्टिभंगी अनेक दृष्टांत रही तेणु हुए तो मिडिल ईस्ट रो गोटे बंदर आज जार नाम कोणार्क अच्छी कोणार्क अच्छी से समय रे कोणार्क रो बंदर रु जहाज गुड़िक आसिक एठी सामग्री ग्रहण करके पुणी आफ्रिकीय देश को जाउथला मंदिर होई पारे किंबा 1000 वर्षर गोटे पुराना पोखरीर तुठ मध्य होई पारे ए भली ऐतिह्य संपन्न स्थान गुड़िकर निरूपण करबा ताको डॉक्यूमेंटेशन करबा आउ 3-4 मास पर शीत दिन पड़ियो शीत दिन लोके बहुत जल्दी कबाट कंडा देकी घर गाँ गुड़िक ताटी कबाट पड़ जिवो सेही समय सबुठु अधिक भय थाए टेम्पल थेफ्ट रे जते बेले हम मूर्ति गुड़िक चोरी हुए सी सब जेकोसी बंदर पाखरे बा विमान बंदर कस्टम ऑफिस रे धरा हुए आमे माने ताहाको दाबी करि पारंतिन जे ये होची हम ओडिसा आमे दाबी करि पारंतिन जे ये नयागढ़ रो कि मयूरभंज रो कि कटक रो काहे कि हम पाखरे प्रत्येकटी स्थापत्यर प्रत्येकटी ऐतिह्यर गोटे डॉक्यूमेंटेशन नाही तेणु राज्य प्रतिनिधित्व ए रज परे परे मु भाबुछि जे पाखापाखि जो 3000 ऐतिह्य स्थली स्थिरीकृत होईछि सेतिरे डॉक्यूमेंटेशन एवं जहाँ भी नथीकरण अच्छी ताहाकु करिवो एवं राज्य प्रतिनिधित्व एवं संस्कृति विभाग समस्त अधिकारी मान को धन्यवाद देवी केंद्र सरकार गोटे ज्ञान भारतम मिशन रे जो मिशन मोड रे कार्य आरंभ होईछि ते हमर पाखरे जो पोथी अछि आम पाखरे जो प्राचीन शास्त्र रही ताहार डिजिटल संस्करण करने एवं ओडिशा रे इतिमध्य रे ए 2-2.5 मास भीतर कार्य आरंभ होईछि पाखापाखि 63,000 पोथी को आज दिन रे ताहार डिजिटल संस्करण आमे करि सारिछंती एवं आगामी दिन मानकरे एहा 1 लाख ऊपर पहुंचिबो एवं 1 लाख पोथी माने पाखापाखि 2 कोटी पृष्ठा ये 2 कोटी पृष्ठा केते बेलर ना विगत शताब्दी मानकर ये अमूल्य संपद को आमर अमूल्य ऐतिह्य को साइति रखिबा पई आज संस्कृति विभाग राज्य प्रतिनिधित्व जो प्रयास करिछि ता निश्चित भाव रे धन्यवाद कथा समस्त को नमस्कार वंदे उत्कल जननी।